Assalamualaikum, my dear brothers and sisters. Today I will tell you about bird feeder. This is a bird feeder. Here we can put food grains and in middle we can fill it with water so that birds can eat food grains and drink water. We can use it in all seasons like summer season and winter season. How about speed birds? Okay, thank you. Assalamualaikum, my dear brothers and sisters. You will be agree with me that plants never eat their own fruits. River never drinks its own water. You know why? Because to live for others is a real life. Yes, my dear brothers and sisters, loving birds does not mean to put birds in a cage. But loving birds means to feed them in an open environment. Yes, today it is very hot season. Temperature is very high. In this time, birds need food grains and water. So arrange food grains and water for birds. Feed birds, love birds. Birds are important for us. Okay, thank you. अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मेरी बहन ने जो बताया शायद वो सारे लोगों के समझ में नहीं आया होगा। मैं वही बातें उर्दू में आपको बताऊं ताकि सब लोगों को समझ आ जाए। आप सब जानते हैं कि दरख्त कभी भी अपना मेवा नहीं खाता है, दरिया कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। पता है क्यों? वो इसलिए कि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। परिंदों से मोहब्बत ये नहीं है कि इनको अपने माहौल से निकाल कर पिंजरे में कैद किया जाए, बल्कि अगर आप परिंदों से मोहब्बत करते हो तो इनको अपने माहौल में ही खिलाओ और पिलाओ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कितनी गर्मी है, तो हमें इस गर्मी में चाहे परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। ये बात सही है कि परिंदे हमें बोल नहीं सकते, पर अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और हमें सोचना चाहिए हर जानदार के बारे में। तो मेरे भाइयों और बहनों, परिंदों से मोहब्बत करो और इनको पानी और दाना दे दो, क्योंकि परिंदे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum, my dear brothers and sisters. If you want to listen songs from birds, plant a tree. Birds are very important for us as they eat insects, germs and pests of plant. In this way, birds clean and balance our environment. So we need to take care about birds' life by feeding them. Love birds, feed birds. Okay, thank you.